Hello students, today I am going to teach you assignment यानी रिवीजन ऑफ संस्कृत सब्जेक्ट जो है अपना स्टार्ट हो रहा है। अभी भी पेपर जो अपने कंटिन्यू हो रहे हैं, चल रहे हैं अभी अपने पेपर जो है फर्स्ट यूनिट टेस्ट 2021 के। इसमें अब संस्कृत है आपका पेपर नेक्स्ट हो अभी तो कि सोशल साइंस के बाद संस्कृत होगा। तो संस्कृत का जब मैं आपको रिवीजन दे रही हूँ, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 इज लिखने का है For each of the given questions, choose the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the box provided। जो हमें दिया गया है तो हमें क्या है, जो MCQs है वो आएंगे, वो हमें लिखना है। तो जो MCQs है वो मैं ये दे रही हूँ। इसमें नंबर 1 है What type of teacher has been saluted? What type of teacher has been saluted? A teacher like, कौन से टीचर को सैल्यूट करना चाहिए, कौन से टीचर है। What type of teacher has been saluted? Teacher like Lord Brahma. B teacher like Lord Shiv. C teacher who is the incarnation of the Supreme Lord. D teacher who has the brilliance of a crores of suns. A में है teacher like Lord Brahma. B teacher like Lord Shiva. Teacher who is the incarnation of the Supreme Lord. And D teacher who has the brilliance of a crores of suns. Our right answer is A teacher like Lord Brahma. Its corresponding जो letter है वो है A, so we write here A। 2 number ही who is Vakrotund and Mahakai। 2 who is Vakrotund and Mahakai। A गणपति, B विष्णु, C महादेव शंकर and D an elephant। Our right answer is विष्णु। तो हु इज वक्रतुंड एंड महाकाय, बी विष्णु। 3 नंबर इन द श्लोक वक्रतुंड महाकाय व्हाट डज द देवती आस्क गॉड टू डू। 3 इन द श्लोक वक्रतुंड महाकाय व्हाट डज द देवती आस्क गॉड टू डू। ए टू रिमूव हर्डल्स, बी to give peace and prosperity, C to make all work successful, D to make all the good deeds of the devati hurdle free। Right answer is D to make all the good deeds of the devati hurdle free। Number 4 what does goddess Saraswati hold? A conch, B a veena and a book, C a wheel, D a lotus flower। So what does goddess Saraswati hold? Our answer is B a veena and a book। यहाँ पर जो है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर बी यहाँ लिखेंगे बी। 5 नंबर व्हाट डज द स्टूडेंट आस्क गॉडेस सरस्वती टू डू। ए टू ब्लेस एवरीवन, बी टू गिव एवरीवन नॉलेज, सी टू बी प्लीज्ड विथ हिम, डी टू मेक द होल कंट्री हैप्पी। 5 number what does the student ask goddess Saraswati to do? Right answer is to give everyone knowledge। Its corresponding letter is B, so we write here B। Now next जो है अपने जो लिखना है तो ऑप्शन हैंगे। नेक्स्ट लेसन 2 है आकाशः पतति का है। Where does the rabbit live? A in a cage, B in a forest,
C. In a house. D. In a zoo. So where does the rabbit live? In a forest. Its corresponding letter is B, so we write here B. 2 number, what scared the rabbit? What scared the rabbit? किसने डरा दिया है उसको, रैबिट को? ए में है ए फॉक्स, बी अ मंकी, सी द फॉलिंग ऑफ अ लीफ, डी अ लायन। एक पत्ता जो गिरता है, पत्ता गिरने से जो रैबिट होता है वो भागता है और वो बोलता है क्या क्या है, आसमान गिर रहा है, आकाश गिरता है, आकाश गिर रहा है, भागो भागो। तो क्या गिरता है असल में? पत्ता गिरता है। तो द फॉलिंग ऑफ ए लीफ, तो वी राइट हियर बी है अ मंकी एंड डी में है अ लायन। अवर राइट आंसर इज क्या है? सी द फॉलिंग ऑफ अ लीफ। 3 नंबर, व्हाई डज द रैबिट रन? रैबिट क्यों भागने लगा? ए बिकॉज अ फॉक्स केम देयर, बिकॉज अ फॉक्स केम देयर, बी बिकॉज अ मंकी केम देयर, सी बिकॉज अ लायन came there, and D because he is scared when a leaf falls. रैबिट क्यों भागा? क्योंकि पत्ता गिरा, इसको डर गया कि आसमान गिर रहा है। तो क्यों भागा रैबिट? बिकॉज he is scared when a leaf falls. Its corresponding letter is D, so we write here D. Number 4, what does the rabbit say to the fox? रैबिट ने फॉक्स से क्या कहा, लोमड़ी से क्या कहा? ए रन भागो बिकॉज द स्काई इज फॉलिंग, बी रन बिकॉज अ मंकी इज कमिंग, सी रन बिकॉज अ टाइगर इज कमिंग, डी रन बिकॉज अ लायन इज कमिंग। वो क्या है? रैबिट बोलता है फॉक्स से भागो क्योंकि, बोलता है दौड़ो भागो क्यों? क्योंकि क्या होगा था? बिकॉज द स्काई इज फॉलिंग, क्योंकि इसका आसमान आसमान गिर रहा है। तो क्या है? राइट आंसर इज रन बिकॉज द स्काई इज फॉलिंग। इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लेटर इज ए, सो वी राइट हियर ए। नंबर 5, व्हाट डज द रैबिट से टू द मंकी? रैबिट ने मंकी से क्या कहा? ए रन बिकॉज अ हंटर इज कमिंग, बी सेव मी मुझे बचाओ फ्रॉम द फॉक्स से, सी रन बिकॉज द स्काई इज फॉलिंग, एंड डी रन बिकॉज द लायन इज कमिंग। राइट आंसर इज सी रन बिकॉज द स्काई इज फॉलिंग। So corresponding letter is C, so we write here C. 6 number, who runs behind the frightened rabbit? कौन रैबिट के पीछे भागा? डरा हुआ रैबिट के पीछे कौन भागा? A the fox, B the fox and the monkey, C the lion, D all the animals of the forest. Who runs behind the frightened rabbit? Right answer is A the fox. Its corresponding letter A, so we write here A. 7 number, after saying the sky is falling, आसमान गिर रहा है, what does the rabbit ask the lion to do? A run, B save me, C you are the king of the jungle, D please move aside. Right answer is run. Its corresponding letter is A, so we write here A. 8 number, what does the lion say when the rabbit tells him the sky is falling? लायन ने क्या कहा जब रैबिट बोलता? रैबिट ने कहा द आसमान गिर रहा है, क्या द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। ए डोंट बी स्कैर्ड, बी वेयर इज द स्काई फॉलिंग, सी वेयर हैज द स्काई फॉलन, C D can the sky ever fall? Right answer is B, where is the sky falling? Its corresponding letter is B.
Next, choose the option in which script is the Sanskrit language written. In which script is the Sanskrit language written? A. Nagrik, B. Nagri or Devanagari, Hindi, and D. Indian. The right answer is Nagri or Devanagari. So in which script is the Sanskrit language written? Nagari or Devanagari. Its corresponding letter is B, so we write here B. 2 number, from which script has the Gujarati script been derived? A. Devanagari, B. Nagrik, C. Rural, and D. Hindi. Right answer is Devanagari. So from which script has the Gujarati script been derived? Right answer is A. Devanagari. Its corresponding letter is A, so we write here A. Devanagari, its corresponding letter is A. Number, what is seen in the curves of many Sanskrit letters? A. Beauty, B. Disability, C. Slight difference, and D. Harshness. Right answer is slight difference. Its corresponding letter is C. What is number आगे है देखिए. What is seen once again in the curves of many Sanskrit letters? A. Beauty, और भी है dissimilarity, and C. Slight difference, D. Harshness. Right answer is C. Slight difference. Corresponding letter is C. We write here C. 4 number, what type of language is Sanskrit for computer usage according to computer science experts? A. Unsuitable, B. Incompatible, C. Incomplete, and D. Completely suitable. Right answer is D. Completely suitable. Its corresponding letter is D. We write here D. 5 number, what is the colon that is written after Ma and Va in words Rama and Deva, known as A. Visarga, B. Upsarga, C है अनुसर्ग અને डी है नासल साउंड. ए है विसर्ग, ए में है विसर्ग, बी में है अपसर्ग, एंड डी अनुसर्ग, एंड डी नासल साउंड. राइट आंसर इज अनुसर्ग. इट्स corresponding letter is C. We write here C. Next, choose the option. The number name. Ekadash means A 1 time 10, B 10, C 11, and D 11th day. Ekadash means 11. Its corresponding letter is C. We write here C. 2 number, the number name. Shat means A 6, B silent, C peace, and D 7. Right answer is B silent. यहाँ पर लिखेंगे B. The meaning of चतवारी is dash. A crossroads, B 4 times, C group of 4, and D 4. Right answer is group of 4. Its corresponding letter is C. We write here C. 4 number, Trini means A in 3 ways, B 3, C 1 with 3 eyes, Lord Shankar, and D group of 3. Right answer is group of 3. Its corresponding letter is D, so we write here D. 5 number, the meaning of
Punch is A. Group of 5, B. Earth, C. 5, and D. 5 senses of our body. Right answer is group of 5. So corresponding letter is A. You write here A. And 6 number में है what does the word अष्ट mean? A. in 8 ways, B. 8, C. 8th, and D. 8th day. Right answer is 8. Its corresponding letter is B. We write here B. 7 number what does the word द्वादश mean? A. 2 times 10, B. 10 minus 2, C. in the door, and D. 12. Right answer is D. So we write here 12 है इसका right answer. What does the word द्वादश means? 12. Its corresponding letter is D. So we write here D. Next, how is the elephant's trunk? Hastinah Sundaki Dashi. A. like a pillar, B. like a python, C. like a big reptile, and D. like a banana. Right answer is D. like a banana. We write here D. 2 number what are the elephant's legs? Like Hastinah Padah Ken Samana. Like A. like pillars, B. like the trunk of a tree, C. like bananas, and D. big and tall. Right answer is इसके लेग कैसे होते हैं हाथी के? तो like pillars. Its corresponding letter is A. So we write here A. How are the elephant's ear? How are the elephant's ear? हस्तिनः कर्ण कीदर्शी A. long, B. like a winnowing trough, C. like a fan, and D. wide. How are the elephant's ear? Right answer is B. like a winnowing trough. So we write here it's the corresponding letter B. We write here B. Number 4. How are the elephant's tusk? हस्तिनः दंतौ कीदृशी? A में है white and long, B. like strong nails, C. tall and big, D. white and short. Right answer is white and long. Its corresponding letter is A. So we write here A. जो पेपर में है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वो आंसर दी क्वेश्चंस होगा इन 1 सेंटेंस इन इंग्लिश. इंग्लिश में आंसर लिखना है. नंबर क्वेश्चन 2 में है आंसर दी फॉलोइंग. आंसर दी क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस इन इंग्लिश. Number 1. Which god has the brilliance of crores of suns? Number 1. Which god has the brilliance of crores of suns? आंसर लिखेंगे गणपति has the brilliance of crores of suns. 2 number is who is holding a veena and a book? Who is holding a veena and a book? तो आंसर लिखेंगे गॉडेस सरस्वती is holding a veena and a book. Who is holding a veena and a book? Answer goddess Saraswati is holding a veena and a book. Question number 3. Where did the rabbit live? Where did the rabbit live? The rabbit lived in the forest. The rabbit lived in the forest. Question number 4.
What does the rabbit say to the fox? What does the rabbit say? Rabbit ने क्या कहा fox को? What does the rabbit say to the fox? The rabbit. What does the rabbit say to the fox? आंसर लिखेंगे. The rabbit says to the fox, run, the sky is falling. The rabbit says to the fox, run, the sky is falling. 5 number है. In which script is Sanskrit written? In which script is Sanskrit written? Sanskrit is written in Devanagari script. Sanskrit is written in Devanagari script. Question number 6. How is the elephant's color? How is the elephant's color? How is the elephant's color? आंसर लिखेंगे. The elephant's color is black. The elephant's color is black. Now question 3 in तुम्हारा पेपर में जो होगा question 3 होगा. Put a right mark करना है हमें. Against सामने करना है the true statements and a wrong against the false statements. Number 1 is the teacher is like Lord Brahma. Right. 2 number, the teacher has 4 hands like Lord Vishnu. Right. 3 number, the teacher is the form of Lord Shiva. Right. 4 number, the second name of Ganpati is Vakratund. Right. And 5 number, Ganpati has the brilliance of 1,000 suns. Right. 6 number, Ganpati walks slowly and heavily like an elephant. Right. 7 number, Saraswati likes to play the veena. Right. And 8 number, there is a lotus flower in one hand of goddess Saraswati. Wrong. Now next, right or wrong. Number 1, Sanskrit is written in the Hindi script. Wrong. 2 number, our mother tongue Gujarati has been derived from Indian language. Wrong. 3 number, the Shirorekha is not drawn over the tops of Gujarati letters. Right. All the letters of our mother tongue Gujarati are written according to the Devanagari script. All the letters of our mother tongue Gujarati are written according to the Devanagari script. Wrong. Sanskrit is the mother of many Indian languages. Right. 6 number, Gujarati is a language that has an exhaustive grammar. Sanskrit is a language that has an exhaustive grammar. 7 number, there are 5 vowels and 21 consonants in the Sanskrit language. All the letters of our mother, एक बार फिर से बताती हूँ, our mother tongue Gujarati are written according to the Devanagari script. Wrong. Sanskrit is the mother of many Indian languages. Right. 6 number, Sanskrit is a language that has an exhaustive grammar. Right. 7, there are 5 vowels. There are 5 vowels and 21 consonants in the Sanskrit language. Wrong. And last question is question number 4. Match the columns A and B correctly to make complete sentences. Last question होगा number 4 है. Match the columns A and B correctly to make complete sentences.
इन कॉलम ए में है 1 नंबर में है शशकः, 2 में है वानर भ्रातः, 3 में है पुत्र पतति एंड 4 नंबर में है श्रृंगाल है। इन कॉलम बी में है 1 में है पतति, 2 नंबर में है आकाशः, 3 नंबर में है शयनम करोति एंड 4 नंबर में है धावतु, 5 नंबर में है अनुधावति। अब हमें मैच करना है, 1 को मैच करेंगे शशकः यानी शयनम करोति, शशकः शयनम करोति, 2 वानर भ्रातः धावतु, वानर भ्रातः यानी धावतु, 3 नंबर में है पुत्र पतति आकाशः, 4 नंबर में है श्रृगालः, लिखेंगे अनुधावति। देखो आपको भी ऐसे लिखना है आंसर 1 2 3 ऐसा 1 2 और 1 2 3 4 लिख के ऐसे ही पहले इसको यहाँ लेना है कॉलम में, फिर इसका राइट आंसर से उसे इसके सामने लिखना है। वंस अगेन 1 नंबर में है शशकः, उसके साथ हम मैच करेंगे शयनम करोति, 2 नंबर में है वानर भ्रातः, उसको मैच करेंगे धावतु, 3 नंबर में है पुत्र पतति, उसको मैच करेंगे आकाशः, 4 नंबर है श्रृगालः, उसको मैच करेंगे अनुधावति।